हेलो हेलो हेलो, we're live. Are we live? Question mark. We are live. हर बार तेरे को डाउट क्यों होता है भाई मेरी एबिलिटीज पे कि मैं ओबीएस चला सकता हूँ या नहीं? Because it's you. Yeah, exactly, it's me. हाँ, इसलिए इसलिए तो दावत होती है मेरे को. गाली खाने वाले काम खुद करता है, देता मेरे को है. खैर अब की बार तो गाली तो कोई और लोग ही खाएंगे तेरे मुंह से. बड़ा मजा आया था मेरे को सैटरडे को. अच्छा हुआ हमने वो किया था भाई. सुकून मिला ना जो मेरे Hmm. को. आहा हा हा. Uh, to ओए. start with, okay, first of all, why am I hearing my own voice? Uh, हाँ हाँ. Now who's the idiot? नहीं, why am I hearing my own voice? I have no idea. छोड़ो, anyways, I will deal with it. Anyways, मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले तो start with Guehi 300K a week. I mean, I understand you got him for very cheap. मतलब it's like कि तुमको सस्ते में मिल गया प्लेयर तो तुमको उसको वेज ज्यादा दोगे. पता नहीं मतलब. I It's mean it's वही मतलब you if you sign Saliba for 300K a week, it's I understand, but if you sign Guehi for 300K a week, uh, पता नहीं मतलब was that the reason कि Guehi wanted only City? मतलब of I don't know. course. I feel I like यार समर में उसका ट्रांसफर ब्लॉक हुआ. Everybody knows he's leaving in the summer. Liverpool are interested. Off chance है Real Madrid might be interested because they will हम्म, be हम्म. looking for a centre back in the summer. तो अगर सिटी को जनवरी में करना है तो कुछ तो देना पड़ेगा ना बंदे को. वही मतलब भाई भी वही नहीं था. of course we are in desperate need of a center back. हाँ एग्जैक्टली. Yes, I mean, I honestly, to be honest, I already see two players leaving. Stones is leaving definitely. Ake is definitely leaving. Stones has So to leave. it's a scene. Stones has to leave. Ake is also. Stones, I think his contract is expiring this summer. Oh, Ake will also be leaving. Yeah, Ake will also be leaving. He's out of choice. And उसके बाद तेरा बचा फिर Diaz and Guardiola will be the primary centre backs with this thing. कुछ ना. I think Guehi, Diaz, and Guardiola will be rotating kind of. Guardiola can also shift to left back at times. हम्म. Kusanov or Ellen might be loaned out again uh, in the summer. Uh, and then Kusanov को वो रखेंगे वो बनाएंगे उसको time है उसको. So I think that's the case. But I don't know. I mean, I thought that Gueve will be starting today, might start today because comparatively, I'm not saying I'm not. I don't want to jinx it, but comparatively, it's an easier match tonight, Champions League, and he's already registered, so he could have played. I think I don't know if there's a still a player registration rule वगैरह वो सब apply होता है अगर अभी भी. I'm not sure about that, हाँ चैंपियंस लीग में तो करना but he's पड़ेगा not. ना उसके स्क्वाड में रजिस्टर आई बिलीव. Yeah, I think that's how it works, right? Still now, so I think he won't be. So probably in the weekend, may probably in the match against this thing. जो अभी अगला मैच है वुल्स. तो हाँ उल्स है शायद राइट. That's Wolves. हाँ उल्स है तो उल्स अगेन विल्स माइट सी गुएही बट आई थिंक द लेटेस्ट मेमोरी आई हैव ऑफ गुएही इज one of the goals that came against the loss against Macclesfield was his mistake actually. One of the goal, I think the second goal, I think if I'm not wrong. So that's my latest memory of him. So which is a very bad memory. But देखते हैं देखते हैं. He's a good centre back. Of course, he's a good centre back, and I don't think he needs time to adapt because he's already playing in the Prem. So वो factor आएगा ही नहीं. It's a good signing. And I saw a thumbnail today, YouTube में. City are playing 8D chess in the transfer market. They are basically going out and signing players, and but there's this good thing about City, man. They get players for really cheap. True. That's one of the things. तो देना वो देना पड़ेगा मतलब तुमको कि भाई. I mean,
after Grealish, I think they learned a lesson with Grealish. I think उसके बाद तो I mean, City have always been a I well think run club ना. तू कोई भी क्लब उठा के hmm, देख ले. चेल्सी का ठीक है, hmm, प्रॉफिट मॉडल है. अभी hmm, टॉड बॉली क्या कर रहा है, नो क्लू. उससे पहले अब्रामोविच जब था, hmm, प्रॉपर hmm, मनी मेकिंग मशीन थे वो, राइट. hmm, उसके अलावा hmm. लिवरपूल इन द रीसेंट इयर्स हैव बीन डूइंग रियली वेल, बट इस सीजन मतलब इस समर ट्रांसफर विंडो में दे हैव स्पेंट क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी. उसके They अलावा spend a lot. आई They डोंट have spent basically. exactly, I can't think of a club who's as well run as City in terms of identifying the correct players, paying the right amount of fees, and paying the right amount of wages as well. Hmm. And But also selling them at a really, really, really exactly, good price. exactly. Right. I mean, they sold Alvarez for fat 85 million, money, I think. man. Fat sum of. हाँ, it was somewhere around Some, 80 yeah, के आसपास था कुछ. Then, of course, they. So I mean, you might say that they sold Palmer for cheap, but when they sold Palmer, that was like 55 million or something. yeah. But that till then he had not proved himself. He had only played So 3 or 4 games for City, right? correct, correct. So he did not play much. He hadn't proved himself. It was just Chelsea going haywire. It's just that their gamble worked out. That's the point. Correct. And अभी जो ऑस्कर बॉब का भी र्यूमर है, he's, I mean, he might also turn out to be the next Cole Palmer kind of, कि बहुत फारू बन जाए बंदा, हो सकता है. Hmm. But I don't think at his current level he is worth 30 odd million. He's not. He's not worth so much. And that to Fulham going for it, that's a bit strange to be honest. But take it. Right. Bro, you're touching Uh, upon Oscar Bob. Okay, I think the only other player I can think of, I as a neutral fan whom I relate with is Harvey Elliott. Strong, hmm. promising, I mean, cameos, played well whenever he has been on the pitch, but injury ridden, right? I think he's currently at Aston Villa, and it's been 22 Premier League games. I can't even remember one game where I've seen him on the pitch. Yeah, yeah. And he has, I Same with think, Oscar Bob as well. yeah, Bob is also very injury prone, very injury prone. So yeah. and Harvey Elliott also Uh, has, I think, 40-45 million ka buyout clause. buyout clause, yes, correct. Correct. 35 million for Oscar Bob चल. is buttloads of money. That is true. Where do you want to Uh, start from? तू अपने खुशी से चालू कर भाई. खुशी खुशी. तू अपना खुशी से चालू कर. यार मतलब Uh, अभी ऐसा हो गया है ना कि जो देखा है आई कांट बिलीव कि वो सच था या नहीं था. आई कांट कमेंट कि वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है. वन थिंग इज फॉर श्योर, इट वाज नॉट द कोचेस टैक्टिक्स. ठीक है, थोड़ा बहुत हेल्प हुआ, बट इट वाज डेफिनेटली नॉट 100% ऑफ दैट. Maybe it was the players trying to prove to the fans, or maybe trying to prove to themselves, or the management, or the new coaching staff, that they can play well if they want to. If is the main word. Secondly, I don't know what is the United way. It's just that we have always been good in transition, and whether it was under Sir Alex, whether it was under Mourinho, or to some extent Ten Hag, Ole ka reign pura. Whenever we performed, in each game we were really, really good under transition. hmm, We have never been a possession-based squad. hmm, I think hmm, मैंने कब देखना चालू किया था, 2008 2009, right after Ronaldo left. हमने आई कांट इवन रिमेम्बर अ गेम जब हमने बॉल रखा हो अपने पास. 90th मिनट में भी बॉल अपने पास है, टाइम वेस्ट मत करो, जाओ आगे, ट्राई टू क्रॉस, ट्राई टू गेट द स्ट्राइकर्स और द विंगर्स इन्वॉल्व. वही देखना है. दैट्स व्हाट वी वांट, राइट? वी वांट टू सी players scoring goals. We want to see players like Nani when we had him. Ex- I don't know what to expect or what to say anymore. But एक चीज जो सबसे स्टैंड आउट थी, वी हैड हंगर. और वो सिटी के अगेंस्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. सिटी वर बैड ऑन देयर पार्ट, ट्रू. हाँ. बट अगर सिटी अच्छा भी खेली होते ना, इट वुड हैव बीन अ हेल ऑफ अ गेम. Close.
it was a very close game. Yes, I Exactly. mean Because that's the point. I mean, this was probably the best United so far this season. this season, in the last 3-4 seasons, ever since Ten Hag was signed, हाँ 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 मतलब ऐसा गेम नहीं खेला है तुम लोगों ने. That is the fact. they मतलब ये beat you, I think, there's this clip going viral na that after triangles. 2-0 they were kind of doing a rondo kind of Yeah, yeah they yeah, were yeah. doing a rondo. I mean, yeah, that is true. That is. I mean, don't know where the United had gone. And we never used to do that. Even under Sir Alex, हम लोग ये नहीं करते थे. We never used to bully Hmm, single players. We used to bully the teams, of course. We used to score hmm, a lot of goals. hmm, But hmm, इस पहले गेम में we started defensively as in a very compact and low block. hmm, We were astute defensively, 90 minutes तक. Whether it be Foden, whether it be Turkey, Haaland, nobody could just pass the defenders or even Casemiro or Mainu for that matter. And the hmm, way hmm. team was set up, we had essentially two fullbacks on either side, Ahmad and Dalo. Remember in the watch along, I was saying Dalo tuck in kar raha hai, four compact hai, and then Doku was being marked by Ahmad. And on the opposite flank, Yes. Semenyo was being marked by Doku. Hmm, hmm, अगर hmm, कोई और गेम होता ना, we would have said we hmm, are playing very defensively. But the hmm, way hmm, we were counter-attacking on every single chance that we were getting, that's the part I hmm, want to see, the players put out every single week. अभी ठीक है, hmm, आर्सेनल है नेक्स्ट गेम, आर्सेनल के अगेंस्ट hmm, ये कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स आई hmm, डोंट नो उसके बाद कौन से गेम्स है, बट जो लो ब्लॉक में टीम्स ऑलरेडी खेलती हैं उनके अगेंस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे, दैट विल बी द टफ पार्ट. एंड दिस हैज बीन यूनाइटेड्स प्रॉब्लम ऑल अलोंग, इवन अंडर मोरिनियो. hmm. Yeah. I don't think it's. I don't think that's the problem. कि low block against कैसा perform करेंगे. The problem is कि will they be able to keep up this performance? से Because well, I want to be optimistic, and honestly, even as a City fan, I want to see United back to their. I mean, not prime, of course. Prime होगी तो जितना चालू हो जाएगी. But in to the good part, मतलब where they finish, मतलब where they are in the title race, where they are in the हाँ Champions League spot एग्जैक्टली. every single season. Even I want to see that. तभी तो because I mean I want to see the top six back to the being the top. I mean Spurs को लात मार दे छोड़. एस्टन विला, कीप Spurs को छोड़ के एस्टन विला इन द मिक्स. हाँ हाँ तो मतलब I want to see them in the top six position every single time. I want them. I mean I don't want to sound like that guy कि नहीं underdogs को chance नहीं मिलना चाहिए. I don't want to play that. But yeah, you have expectations, man. I mean you have expectations from teams. As simple अभी साला ये क्या Aston Villa, after coming through such a good, they won what 10 or 11 games in a row. या Then drew, ये वो, now they lost to Everton. What the hell is this? मतलब ये क्या है? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे सोल्ड वन ऑफ देयर स्ट्राइकर्स, Malan, and I yet to replace him. पता नहीं पता भाई वो We'll come मतलब to यार Villa वो later, हाँ but हाँ तो जो यूनाइटेड वाली बात है ना, whether they'll be able to keep it up. Why I'm a little bit हम्म, optimistic is, firstly, Michael Carrick was part of the Oleka support staff when he was at United. We started in the similar fashion. Secondly, before the Manchester Derby, he had been the caretaker manager, the interim caretaker manager for 3 games before Rangnick joined. correct correct. We won against Arsenal, we won against Chelsea, and I think we drew one game. I don't remember which team it was. And we played similar kind of football. So, तो एक काम करना नेक्स्ट मैच हरा देना आर्सेनल को. अरे 100% bro. I don't want नेक्स्ट Arsenal मैच to win. No नेक्स्ट United मैच fan हरा दे wants यार Arsenal to प्लीज. win the title. भाई वो एमिरेट्स में है, एमिरेट्स में जाके उनके मार के आ भाई. जा. 100% bro. Don't worry. बस it's just that वो low block में ना बैठे हो, वो आए. Arteta should play like Pep. Arteta will be playing not this Pep, the old Pep. Doesn't matter. जब तक तुम पोजेशन रखने का ट्राई करोगे, तुम चांसेस क्रिएट करने का ट्राई करोगे, एंड इफ वी आर, आई वुड से 70 to 80%
as good as we were on the derby day, we will score goals. Because एक चीज इस सीजन बहुत अच्छी लगी है मेरे को, whether it was under Amorim or it is under Carrick right now, we have been scoring a lot of goals. Last year तक ये problem था, we were not able to score goals. Score goals. इस Yes. सीजन ये problem है, we are letting in a lot of goals. Hmm. So that is for sure. If we get the chances, we'll take those chances. 9 out of 10 times. Hmm. That is 100% there. And I think a lot of teams against City have started to do that. जो Pep का system है to keep the ball, to try to exploit, uh, I mean the teams when they want to, press you or attack you. उसके against का जो counter और low block वाला system है ना, a lot of teams have tried to play it now. But And I think Pep has evolved from the keeping position game. He does not do it that much now. Now, that I mean, much, this of is course, if you talk about this season, I mean, the way maybe if you compare it with Arsenal, आर्टेटा ने तो पूरा पेप का सिस्टम ही उठा के चिपका दिया है, जो 100%. पहले करता था, लास्ट जो भी 3-4 सीजन से करता था वो. तो बट ये सीजन आई थिंक बिकॉज ऑफ द होल ट्रांजिशन, बिकॉज द प्लेयर्स दैट ही हैज, बिकॉज ही डज नॉट हैव केडीबी एनीमोर, या And आई मीन he's रॉड्री trying to वाज go नॉट more देयर. direct with the wingers that he's signing now, Semenyo and Doku, Correct, correct. and to some But extent I Chelsea think as well. this season our biggest problem has been that we have been leaking goals like anything. I mean, the only good part I saw was when Diaz and Guardiola were playing. Tub we were not at all leaking goals. Once either of well, both of them were gone, uske baad, even before that, when Guardiola was playing left back, Diaz was being paired with someone else in the center, we were still leaking goals. So I think defensively, yaar, pata nahi, yaar. Pep has always struggled defensively in the Prem. Well, with City, he has always struggled. Except the That has always Rodri been an issue. Ballon d'Or wala season, right? Not Ballon d'Or, treble. Treble. He won the Ballon d'Or in the next year, Oh yeah, kind of. मतलब yeah, yeah. basically, हाँ. हाँ, मतलब वो बैलेंट मतलब वो टेबल वाला ही था. बैलेंडर तो Half of the ईयर में season होता was है, treble ईयरली. wala. Yeah, Ballon d'Or is हाँ calendar हाँ year, na? हाँ हाँ, करेक्ट. Apart from the Ballon d'Or season was like perfect season था, मतलब वो पता नहीं वो something clicked that season, but yeah. But let me ask you a question right here, right now. जब हम Ballon d'Or Rodri और defensive frailty पे आ ही गए हैं से, ठीक है? Did you think Pep was relying on Rodri being the way he was before his ACL injury? That this season he'll come back because Nico has been decent, but if Rodri had been fully fit, up to the game, up to the tempo, you guys would have been, I don't know, up there with But Arsenal, if not being on top, you would have been हाँ challenging them हाँ. every week in, week out, right? Definitely. I mean, this is similar to what happened when Rodri came in from Atletico and when Fernandinho was there. I mean, I don't know how much you followed City back then, but when Fernandinho was there, now, when Rodri was just signed. Correct, correct. So okay, pehle there was Fernandinho and there was they Fernando. signed another Fernando. They signed, yes, but Fernando did not work. Fernando was signed from Shakhtar? uh, no, I think Fernandinho came from Shakhtar. I think. But either it was I mean, in one of the Russian clubs or a Brazilian club. Okay. I don't recall at all. Uh, but anyways, so Fernando did not work out at all, Fernando came and from Porto and Fernandinho Fernando came came from from Porto. Shakhtar. Yeah. Shakhtar, correct. Fernandinho came from Shakhtar. Fernandinho clicked. I mean, he just clicked. But जब Fernando workout नहीं किया, then they signed Rodri. Rodri initially जब उसको chance मिलता था with Fernando, Dinho was on the bench. जब उसको rotation पे खिलाते थे, लाते थे वगैरह, he was not good. I mean, he was bad. I mean, he was bad. He was worse than what Nico is now. Rodri, उसको starting में तो बहुत bashing में मिला था कि देखो they are still City are not able to find a Fernandinho replacement. Even when Fernandinho was retiring, almost retiring, even they were like, नहीं, Rodri is not good enough, ये वो. But of course, he changed himself, he proved himself, and then well, yes, the team got very reliant on Rodri also because of the fact that मतलब वो CDM मतलब उसको तो engine ऐसे ही नहीं बोलते हो ना. There's a reason you call Correct. it the engine position. So of course you are reliant on him, and once that player is not there, it becomes very difficult for a team to cope up. I mean, because वो पूरा टेम्पो सब पूरा मैच का टेम्पो वही डिक्टेट करता है.
तो तुम्हारे पास जब वो प्लेयर चला जाता है तो not just with I mean if not just with Rodri, I mean if you pick up any team who plays a single pivot, जिस कोई भी टीम उठा ले, they're very dependent on their player, and finding a second single same I mean for City right now to expect that Nico will be doing exactly what Rodri is doing is नहीं होगा, मतलब तो लाइक फॉर लाइक तुमको, रिप्लेसमेंट कभी तो नहीं दैट्स द मिलेगा. थिंग, नहीं मिलेगा. तो दैट्स द थिंग, व्हेन रॉड्री यूज्ड टू प्ले यू कैन प्ले डेविड सिल्वा एंड केडीबी टुगेदर and they will be giving you what they do best, right? Because they are not defensively good, they are playmakers, they are box to box. Bernardo is more KDB is more like a direct attacking, he will be the shadow striker kind of, and Silva will be the box to box, मतलब बॉक्स टू बॉक्स नहीं बोलूंगा, जो प्ले मेकर वाला पोजीशन है कि उसको बॉल दो, व्हाट बेसिकली ब्रूनो बॉल कैरियर. यूनाइटेड में करता सिल्वा है. इज मोर ऑफ अ बॉल कैरियर हाँ, रादर देन अ. बॉल कैरियर. हाँ. करेक्ट करेक्ट. बट अगर तुम अभी जैसे इफ यू आर प्लेइंग निको एंड देन यू नीड टू, यू कैनॉट बी प्लेइंग KDB and Silva, KDB and David Silva together. You need to have someone who will come and move to the double pivot if necessary. मतलब वो वाला टीम सिलेक्शन पे भी तुम्हारा मैटर करता है. तो दैट्स द थिंग, आई मीन इफ यू हैव लाइक, तो अगर रॉड्री को खिला रहे हो तो यू काइंड ऑफ हैव इन टाइम्स ऑफ नीड यू हैव 5 attackers, the three at the top and then the two up ahead of the number 6. बट अगर तुम रॉड्री नहीं खेलता है तो वहां पे दिक्कत आ जाती है तुम्हारी. तो आई थिंक दैट्स या जस्ट टू एंड, अभी इवन दो रॉड्री इज बैक, ही वाज आउट फॉर अ सीजन, मोर देन अ सीजन एक्चुअली. वो एक सीजन के लिए बाहर था, वापस आया, ये सीजन वापस इंजरी हुई, तो ही हैजंट प्लेड फॉर लाइक 1.5 years. करेक्ट. So अभी पता नहीं, I don't know if he's gonna be back again. I mean, if you give this season, if he's fit throughout the season, he keeps on playing. Next season might be we see that old Rodri is back, but I'm not hopeful at all. I don't think. And Nico is a good player, of course. वही another Spanish, I think. And ये players तुमको स्पेन से ही मिलेंगे भाई. तुमको और कहीं ऑफ और कोर्स. से नहीं मिल सकते ये वाले प्लेयर. हाँ. तो I mean, Pep started this whole number six setting wala midfielder wala role, right, with Busquets. yes, correct, So, correct. Because oh yeah, no, I don't know if you know the story. Busquets was actually playing as a center back. हाँ हाँ. He was He was very not a slow good on the center back. ball, So basically. he was very slow. Yes. So Pep said नहीं ये खेलेगा, ये सही खेलेगा, इसका पोजीशन चेंज करा. Then मतलब हाँ, सी नंबर 6 पोजीशन वाला जो चीज, आई थिंक पेप ने उसको रीइन्वेंट किया काइंड ऑफ. Correct. तो yeah, so that's the thing over there. So and हाँ अभी पता नहीं, मतलब आई थिंक बट गुंदो वाज देयर, गुंदो भी वो खेल लेता था अच्छा, नॉट ऑफ कोर्स उसका प्ले But स्टाइल as थोड़ा a अलग था, backup, बट he गुंदो, was really good. हाँ मतलब वो, हाँ करेक्ट, एज अ बैकअप ही वाज रियली गुड एंड ही न्यू द गेम, ही वाज वेरी स्मार्ट प्लेयर, गुंडो वाज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर. बट देन वो लास्ट सीजन आया, एक सीजन के लिए डिड नॉट वर्क आउट, ही वेंट, नाउ ही इज बैक, आई मीन ही वेंट बैक अगेन. सो आई डोंट नो, इट्स निको गोंजालेज है वो, ऑफ कोर्स ही इज अ गुड प्लेयर एंड स्टफ, बट I think there needs to be, the world needs to build more number 6s now, because that's the For demand. City to buy. One of them at least. Right. So I thought, to be honest, I thought Romeo Lavia would be a very good number 6, but I was wrong. So yeah. I thought Caicedo would be a really good number six. But he's playing more of a Kante, Makelele wala role, and not a more of a destroyer rather नहीं than वो a. he's करेक्ट उसका नहीं, I don't think, I think Caicedo is, I don't know, मतलब Chelsea fans might hate it, but he is very overrated, man. No I don't know man. why As people are, a United fan, I would want Caicedo in my midfield. bro, you would sign half the Premier League. No, ठीक है, I mean, तो तू ऐसे रहने दे. नहीं, to be honest, if you'll give me 100 million in the summer, ठीक है, to sign either Caicedo, Wharton, Anderson, ठीक है, these are the other two players that we are linked in for the number 6, number 8 role, single or double pivot, whatever we'll play. I would go and buy Caicedo with my eyes shut. You would spend 100 million on a Caicedo, but considering if I would be the United manager, I would spend 50 million each on Anderson and Wharton, Hey, do and you think, sign both of them. do you think Crystal Palace or Nottingham would sell their players for 50 million each? That's why They you signed don't Elliot have Anderson for the. 40 million year and a half ago. That's why you need sporting directors like City has. ए सिटी का कौन सा प्लेयर है जो चीप में आया था
जो लास्ट ईयर में ना हो अपने कॉन्ट्रैक्ट के, या फिर रिलीज क्लॉज पे ही ना किया हो। अरे तो वही ना, वही तो गेम है। इफ देयर इज नो रिलीज क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट, कैसे साइन करेगा तू? और अभी तू मेरे को बोल रहा है कि नंबर 6 की कमी है, नंबर 8 की कमी है, और रिलीज क्लॉज नहीं है अ, कॉन्ट्रैक्ट में, तो इट्स अप टू द क्लब्स, राइट? हम्म, एंड ऑफ कोर्स वी एंड अप पेइंग that द is also यूनाइटेड true. टैक्स, 20-25 मिलियन एक्स्ट्रा ही देते हैं हम लोग, दैट इज But देयर। but you won't get Kaysera for 100 mil. Kaysera was signed for 100 mil or something, right? Caicedo signed for 110 or 120 million. That was just a हाँ, they would be selling for hypothetical 200 million. situation. That was just a वो hypothetical 200 का प्राइस situation, टैग bro. लगाएंगे उस पे। 100%, bro. I don't think they'll even sell Lavia for 100 million. They signed him for Lavia, 70 or I don't 80 million. Lavia is not playing, I think. Because he's always injured. He's still at Chelsea? I Yeah, haven't seen him in yeah, yeah, ages. yeah. I thought he went to somewhere else. He played a couple of games this season. He's still at Chelsea, Ah, okay. but he has been Hmm. very unlucky with the injuries that he's getting. Hmm. 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 So, Right. Uh, anyways, of course, first match था वो of the week, the whole City United City वाला match that he lost. Of course, City lost, and then Arsenal drew. oh, ने, हाँ, Arsenal drew, and then I thought उसके बाद एस्टन विला जीतेगी। नहीं, हमें तो हगना है, हमें हारना है। भी नहीं, हारना है, that too against Everton. मतलब that was the point. I mean, I don't know. I mean, I was saying this thing a couple of streams back कि यार I don't see last मतलब continuous last कुछ सालों में apart from City some other team building pressure at the top. Right? It was Nobody has been that Villa's consistent. best chance. That I mean, भाई तुमको Villa should have won this match, यार. I mean, of course, I like I don't know. I just like Everton, to be honest. I always kind of liked True, true, Everton. true. Maybe because they were the underrated. I mean, the whole Merseyside derby because they were against. I mean, that's maybe because of that एंड reason. I मोइस always का kind of पहला liked. रेन, और उसके बाद जब बार्कलेज वाला टाइम था हाँ, टिल 17-18, दे वर रियली yes. गुड, ऑलवेज टू पुश फॉर द It's यूरोपियन just that स्पॉट. correct. It's just that I never liked Pickford. I don't know. I always hated that player. But apart from it, also I think right now Grealish is there. I see what he's doing, and मतलब सही लगता है. I always like the team. I'm happy, you know, Everton won, but I'm not happy that we are lost basically. So if they would have won, the gap at the top would be 4 points. Now the gap at the top is still 7 points. So पता नहीं मतलब क्या चल रहा है, but हाँ. Because expect because some I mean कुछ a few matches back the gap was 2 points at the top between City and Arsenal. And in the last 4 matches, City have drawn 3 matches and they lost the last one. So basically, in the last 4 matches, City have got 3 points out of a possible 12. Out of a possible 12, City have won 3 points. City have got 3 points only, which is bad, really, really, really bad. But yep. To touch base on Ah, Aston Villa as well, they are playing Buendia as a लेफ्ट मिडफील्डर, लेफ्ट विंगर वाला रोल, ठीक है? correct. They had Hmm. a couple of seasons back, I remember, along with I'll tell you what has been happening. John McGinn has been playing as a right midfielder, right winger वाला role, as an inside forward, inside midfielder. Left में Hmm. it used to be either Morgan Rogers or Buendia, or off the bench either of Hmm. the two names that I'll take used to come on. Okay, one was Musa Diaby, the other was Leon Bailey. They sold both those players. They tried to replace them with Rashford last year, didn't sign him in the summer, replaced Rashford with Jadon Sancho. With Rashford in the last January transfer window, they signed Donald Malen from Dortmund. They sold Malen to Roma. Of course, I think they've profited 5 or 6 million from the sale. Okay, but Hmm.
Hmm. If you're going to sell a player in January when you're in the title race, sign a better player. They don't have anyone except Watkins who can play as a nine right now. We're talking about Aston Villa, who are on, I think they're on level points with Man City, right? 43, if I'm not wrong. Same point. Goal Same difference. points. Yeah. I think City has a better goal difference. Yeah. It's like you don't even want to try to win the title right now. Hmm. You're selling Hmm. players left, That right, is and true. center, not signing anyone. Why would you do that? It's not like there's a FTP rules का और breachings का कुछ sanctions हो रहा है तुम्हारे ऊपर. There's nothing like that. ऐसे में अगर यूनाइटेड ऐसा कर रही होती ना भाई, चढ़ जाते हम लोग. And thankfully we've never done this. Of course, जो signings ऐसे करते हैं, क्या नहीं करते, that all a different thing. If you're competing for something and you're not giving the manager or the squad an addition, नहीं भाई, ऐसे नहीं चलता है ना फुटबॉल क्लब. और ऊपर से फिर ऐसे हारेंगे तो देयर इज नो जस्टिफिकेशन. और Hmm. तब तुम एमरी को भी ब्लेम नहीं कर सकते. बेंच से लाने के लिए कोई नहीं है उसके पास. जीडन सांचो, ही इज आउट इंजर्ड. हार्वी एलियट का हमने बात करी थी, ही इज आउट इंजर्ड. एलियट तो बहुत टाइम से इंजर्ड है. ठीक है, मैं इंजरी लिस्ट भी बता देता हूँ. बुबकार कमारा, ही इज आउट टिल फेब्रवरी. रॉस बार्कली, ही इज आउट टिल फेब्रवरी. आमदू उनाना, ही इज आउट टिल फेब्रवरी. तुम्हारे तीन मिडफील्डर्स, ठीक है, बाहर Hmm. हैं. Onana is, I think, the most important one over there. ओनाना एंड कमारा बोथ, बिकॉज दे, Kamara as well. ठीक है, बिकॉज टीलेमेंस के साथ कोई ना कोई एक स्टार्ट करेगा एंड द अदर वन विल बी ऑन द बेंच. वो बाहर है. और टीलेमेंस कैन प्ले एज अ 10 विद रॉजर्स मे बी स्टार्टिंग ऑन द लेफ्ट एंड बुएंडिया कैन कम ऑफ द बेंच. बट अगर ये Hmm. सब बाहर हैं, तुम उसके बाद प्लेयर भेज भी रहे हो एंड यू आर नॉट साइनिंग एनीवन, तो देयर इज नोबडी एल्स टू ब्लेम बट द मैनेजमेंट. True. और मे बी दे आर जस्ट हैप्पी विद द चैंपियंस लीग स्पॉट. बट दैट टू ओनली टाइम विल टेल. अगर ऐसे ही चलता रहा तो द लीग इज रियली रियली टाइट. Champions League spot से याद आया. You guys are just 1 point off the Champions League Oh spot. yeah, yeah, yeah. 1 point. Well, I think the fifth place will also get Champions League, right? Fifth place should get Champions League. We'll get confirmation once the round of 16 starts. Round of 16 and quarterfinals तक पता चल जाएगा, but mostly हाँ fifth हाँ place हाँ should हाँ हाँ suffice. हाँ. Correct. जो So, coefficient भाई translate होगा वो वो I think quarterfinals तक हो जाएगा. don't want to jinx it, but maybe welcome back. Thanks man. After how long? After how long? When was the last Champions League you guys played? Which year? Ten Hag's first season. Which was 22, 23. नहीं. नहीं, we didn't finish. Ryan Rangnick था उससे पहले घंटा. No. When did we play? हाँ. I don't even remember uh, why it's been that long. भाई. Oh, uh, even Google can't answer now. गो तो रुक जा. Uh, 2013-14 मैं देखता हूँ. 2023-24. अरे, टेनाक का 2020. सेकंड सीजन. No, टेनाक how? फिनिश फोर्थ ना. टेनाक का सेकंड सीजन. 23-24. अच्छा, you guys were playing 23-24 में, मतलब Yeah, 23-22 you finished top four. yeah. टेनाक का फर्स्ट सीजन में फिनिश टॉप हाँ. 4 एंड गॉट एन एफए कप, राइट? अच्छा हाँ, you guys got the trophy that season. Correct. गार्नाचो एंड माइनू स्कोर्ड नहीं, इतना भी याद नहीं है मेरे को, अगेंस्ट बट सिटी. हाँ. अच्छा हाँ. अरे वो ट्रॉफी जो दे दी थी हमने तुमको कि हाँ ले ला. दे दी थी. मैन्यू का गोल चला वापस. रैशफोर्ड तो जाने दो, उसकी तो बात नहीं करेंगे. सॉरी, रैशफोर्ड नहीं, गार्नाचो होता है. यार अभी there's a second leg upcoming ना, Arsenal and Chelsea of the semi-final Carabao. Carabao.
Yeah, if Arsenal lose that, na, I think that's when their morale will go down. I have a very strong feeling. यार टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी लगता है आर्टेटा को gyökeres को बेंच करना चाहिए, Jesus को स्टार्ट करना चाहिए। और नहीं, उसमें दिक्कत है. व्हाट? So Gyökeres he's a direct striker. Jesus is not a direct striker. That's the problem. Jesus always he has the mode of the ball. He always drifts प्ले wide. मेरिनो, प्ले मेरिनो। Ah, Mikel Merino. Ah, you Gyökeres can say Merino in Gyökeres the couldn't striker. even beat his man when he was two spaces ahead against Nottingham. Of course, Murillo is a great centre back, बट जब उसके पास बॉल थी and he was two steps ahead, Murillo का बैलेंस भी सही नहीं था। He was almost on the ground and he caught up with him. इन Gyökeres के लास्ट ईयर का सिटी वाला परफॉर्मेंस याद है ना तेरे को? एमरिम का मैं वही लास्ट बोलने ईयर। वाला था. Gyökeres सिर्फ सिटी के कैसे परफॉर्म करेगा? नहीं, it's not like that. Like, initially he performed decent enough, ठीक है, टीम में स्पॉट चाहिए था, and then Jesus नहीं था उस टाइम पे, right, to come off the bench, he was out injured. But अगर जिस चीज़ का तुम्हारा स्ट्रेंथ है, to hold off the ball, to turn, to run in behind, अगर तू वो वीक इन वीक आउट नहीं कर पा रहा, maybe you need a rest, maybe you're not in the best of form. You can't keep playing a player just because you want to be more direct. That's not how you win titles. एक वो भी चीज होती है ना कार्तिक कि when you have spent that much amount of money on a player, So trust me, you cannot keep that player on the price bench. tags and the way players perform, as a United fan, हम लोगों से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। But जब टाइम आता है, you need to bench them, and for your own good as well as the players. मैं ये See, नहीं बोल रहा हूँ कि I'm not, I'm टीम not को I'm not मैच मत denying खेलो। it. कीपिंग ऑन द बेंच 30 मिनट 35 मिनट के लिए लेके आओ, लेट हिम प्ले। पता नहीं. I mean that has been the thing. I mean in that case, अगर if even if we talk about Liverpool, Word should have been on the bench. Should be on the bench now. अभी वो एक दो गेम से खेलना चालू किया है. वो पूरा सीजन कुछ नहीं किया है वो. देख, एज अ फर्स्ट हाफ स्ट्राइकर ऑफ द एंड एज अ सीजन कुछ नहीं किया है मिडफील्डर, वो. एज अ स्ट्राइकर एंड एज अ मिडफील्डर बहुत अलग चीज़ें हैं। और Gyökeres स्टार्टेड डिसेंटली, और ठीक, और लिवरपूल के पास अभी ऑप्शंस भी नहीं है वर्ड्स के अलावा खिलाने के लिए, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ईसाक इज आउट इंजर्ड, साला हैज नॉट कम बैक येट, ही इज नॉट इन द स्क्वाड, उसका फ्यूचर क्या है, इट्स वेरी अनसर्टेन। तू सोच ना विंगर्स पे किसको खिला रहे हैं वो? गैक्पो एंड वर्ड्स वाज कमिंग इन ऑन द राइट, फ्रॉम द राइट, और सोबोस्लाई खेल रहा था पहले। उनके पास प्लेयर्स नहीं है, दैट इज देयर, बट आर्सेनल के पास हैं that they can rely on. I think more than issues, I think Merino makes If you want to play sense. directly, Merino play makes sense. Merino, but Play Merino, change yeah. the formation, man. Not exactly the formation, change the tactic a little bit. It's fine. अगर तुम नॉटिंघम के अगेंस्ट ड्रॉ कर रहे हो, तुम ठीक है, कितने पॉइंट्स की लीड है? 5 पॉइंट्स की लीड है अभी। कब चली जाएगी पता किसकी? नहीं आर्सेनल चलेगा। की? हाँ, 7 7। 7. कब चली जाएगी पता नहीं चलेगा। 16 गेम्स बचे हैं अभी। You need to start winning वैसे matches और in a game. वैसे भी अगला मैच तुम लोग तो हराने वाले हो. तू हम लोगों के अगेंस्ट लेके आओ Gyökeres, फिर लीचा आएगा, फिर मगवायर आएगा, हो सकता है डेलिक भी आ जाए तब तक। तो भाई मैगवायर व्हाट अ प्लेयर मैन. भाई क्या थर्ड है भाई उसका. उसके ऊपर प्लेयर का किताब नाम लिखनी ही चाहिए भाई. सबसे प्यारा है उसका भाई। भाई बहुत मतलब कैप्टन यार. कैप्टन आर्म्स बैंड छीन लिया. पूरा क्राउड बू करता है. That guy did not give up man. He's like एक मैं जाएगा कुछ नहीं नहीं भाई. बोला, ना सोशल मीडिया पे ना किसी इंटरव्यू में, कुछ नहीं। Nothing. हाँ nothing nothing. No bad words nothing. मतलब बाकी प्लेयर्स इतना रोते हैं ये करते हैं वो करते हैं. कुछ नहीं भाई. मेरे को बेंच करना है करो. जो करना है करो. मैं वापस आएगा.
I think he started playing because of the injury crisis, right? He started Correct, correct. playing, Yeah, yeah, yeah. yeah. And then he proved कि why I should be playing. And he's not just defense, he's just last minute goal, जो header weather मार के वो मारता था वो. Oh my god, fairy tale story, man. 100%, man. That's the only reason I want him to stay in the squad next season as well. मतलब, you need these kind of players. He can be a Hmm. real role model for players like Euro and Heaven. जब उनको game time नहीं मिलेगा या they are not able to perform, यही यही चीजें तो होंगी जो प्लेयर्स से तुम बात कर सकते हो, यू कैन लर्न फ्रॉम देम। Correct. यही प्रोफेशनलिज्म चाहिए, जो आजकल के प्लेयर्स में नहीं दिखता है। True. Very true. But I think one of these things, I mean, if you look, recently there have been a lot of, okay, I think we are kind of almost done with the Premier League. ऐसा कुछ कुछ था नहीं मैचेस के अभी बारे तक में तो ऐसा ज्यादा। कुछ बचा नहीं था। और ये वीकेंड पे कुछ हाँ इंटरेस्टिंग भी नहीं था हम वैसे भी किसका कर बट सकते हैं, एक इसकी बात कर सकते हैं मे बी, चेल्सी। नहीं तो आई हैव अ हाँ चेल्सी या द मैच बोरिंग डोंट यू मैच थिंक था। चेल्सी वर लकी टू विन 2-0? यस 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 इट शुड हैव एटलीस्ट बीन 2-2 or 3-2 to either of those things. मुझे तो मतलब पता नहीं है चेल्सी टीम भी साला पता नहीं कब समझ में आने लगी है बट हाँ बट पर वही होप दिस नहीं है। सीजन द होल प्रीमियर लीग हैज बीन सो बैड एवरीवन हैज बीन सो बैड मतलब क्या ही बोलूं मैं और इतने भाई तुम इनकंसिस्टेंट है अभी ना, आर्सेनल सिटिंग हाँ इतने इनकंसिस्टेंट है ना सब। आर्सेनल से लेके बहुत ज्यादा who's at बहुत the ज्यादा bottom अभी, वूल्स, चल वूल्स हटा दे, दे आर एन आउटलायर। बर्नली तक ले ले। मतलब इस बार ये सीजन प्रोबेबली 80 पॉइंट्स मतलब अराउंड 80 पॉइंट्स आर्सेनल विल बी विनिंग द सीजन 80 is too much, I तो think. They'll finish below 80. हाँ मतलब वही मतलब 80 बेंचमार्क रख देते हैं तो उसके अराउंड मतलब विच वो नहीं दिखता है प्रीमियर लीग में प्रीमियर लीग हाँ 80 में बहुत कम बार ही ऐसा मतलब लास्ट फ्यू इयर्स का अगर बात कर लो तो बट इस बार दिस ईयर एवरीवन हैज बीन बैड 80 पॉइंट से एंड नीचे का तो विनर लास्ट 10 11 12 मे बी उससे पहले ही आया होगा। correct. Oh, we forgot to touch one thing. West Ham, Spurs. आई थॉट स्पर्स के बारे में बात नहीं West, करेंगे। Spurs के बारे में बात नहीं करेंगे, but नहीं West Ham getting a win after how long, man? After how long? God knows how long. मतलब like क्या हो रहा है भाई? Wolves beat West Ham. We beat West Ham a few days back, and then West Ham beat Spurs. But yeah. Anyways, क्या हो गया है स्पर्स okay. को So भाई? the भाई मैं बोला ना ये वो टीम है स्पर्स तो एक्चुअली वो टीम है जो सिटी के अगेंस्ट खेलती है बस लास्ट कुछ मैचेस लास्ट कुछ साल पकड़ ले वो सिटी के अगेंस्ट पता नहीं क्या हो जाता है उनको आई दे इवन बीट सिटी बैडली वन सीजन लामेला वाला जो गोल था, ah हाँ। I don't remember I mean no टू I think टू before the थ्री interview सीजन्स बैक शायद। I think before the interview Pep said something like Spurs is a Harry Kane team and then after Hyun Min Son he scored he went to the camera and said something about you know who I am, you know who I am, something like that. So, yeah. But yeah. Anyways, okay. So the one point which I was trying to make is कि जब तूने बोला ना कि okay, जब तूने बोला ना कि प्लेयर्स आजकल हम्बल नहीं होते हैं प्ले टाइम नहीं मिलता है तो ये नहीं करते वो नहीं करते मुझे पता नहीं ये दिखाने वाला वो हाथी के दांत दिखाने के अलग चबाने के अलग वाला सीन है या क्या बट एवरी टाइम आई सी हालंस इंटरव्यूज हालन सेइंग समथिंग ही कम्स आउट टू बी अ रोल आइडल काइंड ऑफ अ थिंग मतलब उसको ऐसा लगता है कि भाई क्या बोल रहा है मतलब बिकॉज इफ यू लो सी आई थिंक रिसेंटली व्हाट एम्बापे डिड राइट you have seen that thing right when they lost the final करेक्ट करेक्ट। Mbappe was like नहीं हम
वो नहीं देंगे, गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देंगे, चलो चलो वापस चलो, ये एम्बापे वाज द वन। देन बाकियों का भी तो देख लो, यमाल का भी आते रहता है न्यूज ये वो, बिकॉज अभी इफ यू लुक एट द वर्ल्ड, मतलब यंगस्टर्स के हिसाब से टॉप में, तो एम्बापे इज ऑलवेज देयर, यमाल इज देयर, हालैंड इज देयर, देन ऑफ कोर्स देयर्स पेद्री वगैरह, बेलिंगहम, those kinds of players. So if I look at those players, I think because Mbappe, if I look at Mbappe's interviews and stuff, the way he says things, I mean, हाँ, he's वो जो replies देता है ना वो, I think recently one of the, I was seeing something and he was asked because I think even this year, last year as well, I mean, ये हुआ है कि Haaland has been subbed off a lot of times when he was at 2 goals. A lot of times. Obvious reasons. I mean, they are winning comfortably and all, but a lot of the times, अगर तुम बहुत प्लेयर ऐसा होगा कि सब करोगे तो तुम you will be कि नहीं ऐसा कैसे कर दिया मेरे Correct. साथ ये They'll वो. kick हालन. something or show dissent basically. Anyways, I think Palash has said big fan sir. That's for you, I guess. अरे नहीं नहीं सर, दोनों के लिए सर. दोनों के लिए. Okay, okay, okay. शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया. But he's in Uh, Manchester right now, so and he has started Holy supporting shit! City. I'm a big fan of you, sir. So, anyways, Manchester अगर आएंगे तो फिर I have another option now. I already have a friend over there. Now I have another option now. Interesting. But yeah. Anyway, so okay, so Haaland was asked about this thing. कि every time you have been subbed off at 2 goals, I mean, don't you feel angry? ये वो बोला कि नहीं, मतलब of course you look at the hat trick, you see of course those are records, personal records that you want to chase, वगैरह वगैरह. But then no, I cannot be annoyed. I cannot show my angry that I am angry or anything, because that would be wrong for the other players who are coming in, right? So basically, I am saying that you are not good enough to come on. I have to respect the other player as well, right? Who's coming in front of me. And a lot of people have said a lot of things, but I don't remember someone giving so, that kind of a reply, to be honest. I don't remember. I mean, people can give different kind of replies. Ki, nahi, main wo nahi hu. But when he said about the other player, right, that I need to respect the other players who's coming in front of me, coming in for me. He's also a player. He's also he's maybe the manager sees something that he's good enough to be there for to have an impact on the game. That's respect. I mean, that's also the question mark is I don't. If you look at the greatest players now, if you look at those great players in history as well, none of them are humble. I think they A are there striker, you can never be because humble. In terms exactly. I of mean, game yeah. time, in I mean, terms of goals, you need to be fierce. go. Yes. Yes. So that's the thing. I mean, it's very hard for me to digest. Ki you are being so humble, but pata nahi, matlab. And also since we already, I mean, I know I'm blabbering a lot today, but anyways, also since I'm already on topic of Haaland, I think City has a Haaland problem. Ah, so glad to hear City it. City has a Haaland problem, which is nothing but we don't have a second striker problem. Because a team which has Haaland in it cannot have another good striker in that team. We had Alvarez, who was a great player, and Alvarez was also able to strive. But of course, when in bigger, I mean, that was the problem, right? In bigger matches, he did not get the chance because in bigger matches, you won't play him as a winger. You cannot play him as a striker. You won't play him as a number 10. KDB was there. You have to play KDB as the number 10. Wingers, there are better direct wingers. I mean, who are better wingers basically, who are proper wingers. You have to play them. So you have to give Alvarez on the bench. Now we signed Marmoush last season. Marmoush was one of the best strikers in Bundesliga when he was signed, He was the right? best finisher I'd seen in Bundesliga Yes, since a long time. correct, correct. But now I don't think you can. I don't think if City was to sell Marmoush tomorrow, I don't think they can sell him for even 40 million because his आराम से. market नहीं वो परफॉर्म नहीं किया है ना, वो नहीं खेल रहा है. He's not getting the game time. He's not able to do what he's not able to show what he can do You in the can't say कि उसने that's that, परफॉर्म नहीं किया है, तुम गेम टाइम ही नहीं मिला है उसको. He's that not been exactly able that's to the adjust thing in the that Premier League. तो तुम उसको कब लाओगे? एक तो तुम उसको तब लाओगे when you're winning the game. When you are winning the game, you will make multiple substitutions. तो तुम्हारा जो वो प्ले मेकर है, एक तो तुम्हारा इंस्टिंक्ट चला जाता है. यू ट्राई टू कंट्रोल द गेम, तुम गेम मैनेजमेंट चालू कर देते हो, तुमको गोल्स नहीं चाहिए वगैरह वगैरह.
And if you're losing the game, you won't be subbing Haaland. Last match, I was surprised Pep subbed Haaland. I mean, maybe he was not seeing anything. Maybe he was like, it's a let's कुछ मे बी गैम्बल कि मतलब गैम्बल करते हैं कि हालंड को सब करते बुकासा को लाते हैं कुछ होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा जो भी है बट I have not seen Haaland being subbed off anywhere at the losing calls since a long time. So I think City have a Haaland problem right now. So basically, it's like if Haaland is not performing on the pitch, we don't have anyone to look up to who can come and do. You cannot be relying on Haaland to score every. He's not scored in the last 5 matches. I think he's still the Golden Boot holder as of now. So that's the kind of impact he has. But you cannot be relying on him when he's not working with him. You don't have an option. That's the problem. So what I believe is, ever since you guys have signed Haaland, you've tried Hmm. to build the team or build the tactic around Haaland, Definitely, definitely, and this can't happen. definitely. If you tell me right now, as a United fan, who is the up and coming player from the academy? Menu probably in the midfield, right? Or Bruno Yes. at the peak of his Hmm. career. I would not want the manager or the board to build a team around either of them. Reason being, let them be the facilitator, but if you become rigid कि नहीं मेरे को तो इसको खिलाना ही है इसके आसपास ही बनाने will not work. You end up That's the like, agreed. But even if you don't do that ना even if you don't do that अगर तो वो रिजिड नहीं भी होते हो यू डोंट ट्राई टू बिल्ड अ टीम अराउंड एक देख एक बात तो सिंपल है यू नीड अ नंबर 9 इन द टीम 100%. नो मैटर व्हाट यू नीड अ नंबर 9 इन द टीम you cannot who would be signing for who would be signing for City until Haaland is there कौन सा स्ट्राइकर आके खेलेगा There भाई will be people. I'll tell you. There will be people. Aguero था. Aguero, in my opinion, had a much bigger impact on the squad than Haaland has had. मेरे को हालैंड से डर नहीं लगता. नहीं मैं तेरे को तब अभी बताऊं, मेरे को हालैंड से डर नहीं लगता है. जब अग्वेरो होता था ना, मेरे को अग्वेरो से ज़्यादा डर लगता था. बिकॉज दैट गाय वाज मेनेस. उसको वो मतलब सिर्फ फीड नहीं करना होता था तुम्हें. हालैंड को तुम्हें फीड करना है. एग्वेरो के टाइम पे ये अच्छी बात थी कि वी हैड जेको हु वाज हैप्पी नहीं मतलब हु वाज ओके विद हिज रोल अगर तू सेकंड ही वाज हैप्पी स्ट्राइकर बीइंग अ हटा दे ना, सब अगर तू सेकंड स्ट्राइकर की बात हटा दे, अभी सिर्फ हालैंड और अग्वेरो को कंपेयर करे, ठीक है. अग्वेरो was a complete striker. He could हाँ play off someone else. He करेक्ट could be the main करेक्ट man. He could drop off a little to receive the ball. Okay, he was good with his feet, passing wise. He was brilliant. ठीक है, but Haaland के साथ ये problem है, he's maybe a bit too one-dimensional, and he's really good at that. He's probably the best. हाँ नहीं करेक्ट करेक्ट वही है ना अभी वही सेम थिंग व्हेन यू कंपेयर हालंड विद एम्बापे काइंड ऑफ अ थिंग इट्स द सेम डिबेट राइट इट्स द सेम सेम Exactly. इट्स द सेम डिबेट आई मीन तो वही वही चीज है बट हाँ मतलब वो चीज मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ तू जो कह रहा है कि मोर वो एग्रीड बट आई थिंक आज हमें मतलब वी नीडेड अल्वारेज टू बी देयर आई थिंक अल्वारेज बिकॉज I don't see Marmoush. Well, Alvarez, I think, would have been a way better fit. So I think आज अगर Alvarez रहता ना उसको गेम टाइम भी मिलता यार बट मे बी नॉट एज अ नहीं मिलता. स्ट्राइकर दैट्स द The थिंग amount of time he's getting at Atletico वो नहीं मिलता उसको. And then वो Spanish connection भी था that he wanted to go back to Spain. But हाँ 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 नहीं वो अमाउंट ऑफ नहीं मिलता ऑफ कोर्स वो अभी उसको ही इज प्लेइंग इन एंड आउट एवरी सिंगल मैच ही इज प्लेइंग 90 मिनट्स एवरी सिंगल मैच तो वो तो नहीं मिलता यार वो तो कुछ it's वही है ना also ही हैज आई थिंक आल्सो मतलब वही उसको द अदर पॉइंट वाज ही won everything at the age of 21 man नहीं everything अगर तू कुछ एक्रिलेट हटा भी दे, he saw an opportunity जहाँ पे एथलेटिको को ग्रीजमैन को रिप्लेस करने के लिए कोई चाहिए था. एंड फॉर मी ग्रीजमैन का परफेक्ट रिप्लेसमेंट है एल्वारेज. इन terms of technical ability, in terms of playing style, in terms of the amount of goals or goal involvements in general he'll bring to the table. And maybe he's an upgrade over Griezmann. वो तो of course only time will tell, but he has all those things.
वो भी एक पॉइंट है बिकॉज हालैंड के साथ वो इतना लाइमलाइट में नहीं आ पाता है यार, तू सोच ना, वर्ल्ड कप जीत के आया है बंदा, हम्म, ठीक है, हम्म। एंड ही प्लेड वेल इन द वर्ल्ड कप। ऐसा नहीं था कि बस बेंच पे था या कुछ था, नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। ठीक है, ही अरे प्लेड वेल वेल। क्या, आई मीन आई थिंक ही वाज अमंग द टॉप स्कोरर्स इन द लीग वर्ल्ड कप में, वो वाले वर्ल्ड कप में ही स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स एज वेल। तो तो उसके बाद अगर यू हैव टू प्ले सेकंड फिडल टू हालैंड और उस टाइम पे गेम टाइम भी नहीं मिलेगा और यू आर बीइंग प्लेड आउट ऑफ पोजीशन, और नेक्स्ट सीजन में तुम ये बोल रहे हो कि आई एम नॉट श्योर तुम्हें कितना टाइम दे पाऊंगा मैं, दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क, राइट? ट्रू, आई थिंक ट्रू। within a season or two you guys will have to decide whether you want to stick with Haaland, get other players in who can supplement him week in week out, or maybe you guys can do one thing. If you guys find a striker who's unselfish enough to say, "Ha, I'll be the number two to Haaland," you guys need to find maybe a plan B whenever the other striker is on the pitch. जैसे अभी तू बोल रहा था, जोकरेश को हटाया तो Jesus को लेके आए, तो चेंज करने पड़ेंगे हम्म, टैक्टिक। You'll have to do that. अगर तुम टैक्टिक चेंज नहीं कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू बी मोर डायरेक्ट, देन यू आर आई मीन वन डिमेंशनल ओनली, और ऐसे नहीं चलेगा फुटबॉल में भाई। इफ Jesus wants ball in his feet rather than maybe high balls or anything, हम्म, he wants हम्म, to be involved or he wants to drift by, ठीक है ना, play Eze instead of Odegaard or play Eze instead of any other midfielder, or ask Saka to cut in, ask your other winger to cut him and come in। वो तो मतलब ऑफकोर्स करना पड़ेगा, अदरवाइज तो तुम खेलते रहो जोकरेश के साथ और हालैंड के साथ, जब वो स्कोर नहीं करे तो बैठे रहो। एंड देयर विल हम्म, बी गेम्स जहाँ पे कोई भी स्ट्राइकर हो, कितना भी वर्ल्ड क्लास हो, ही विल हैव हिज ऑफ डेज जहाँ कुछ नहीं कर हम्म, पाएगा वो। हम्म। Let's see वन how it आर्सेनल का works भी out. हुआ ना अभी नॉटिंघम वाले मैच में, आई थिंक द फर्स्ट शॉट ऑन टारगेट वाज इन 56 और 58th मिनट। हाँ 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 हाँ, व्हाई? करेक्ट। यू हैव साका, यू हैव मार्टिनेली, क्या क्या? यू हैव जोकरेश, ठीक है, हम्म, राइस इज आल्सो देयर, हम्म, जुबिमेंडी तो ठीक है सिटिंग सिक्स खेल रहा है अभी, and I'm not sure who started in the midfield along with Zubimendi and Rice. But you don't expect this from Arsenal. That too in a season जब वो टाइटल के लिए compete कर रहे हैं, और वो भी हाफ मतलब 60th मिनट तक कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं भाई, बी प्रोएक्टिव, यू हैव प्लेयर्स ऑन द बेंच, डेप्थ है अब इतनी कि when नीड भी तुम कुछ चेंजेस कर पाओ, राइट? वो चीज़ तो यार उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो तो करना ही पड़ेगा। There can never be just one tactic कि यही करो यही करो यही करो। लग रहा है मेरे को जाना पड़ेगा पेप के पास। ऑल द बेस्ट, पेप के पास जाओ, दो टपली मारो, पूछ क्या कर रहा है अभी तो, निकलो यहाँ से। एनीवेज, चलो ये बहुत ज्ञान चौधा हो गया आज, ये सब खत्म करने से पहले एफ कौन देखा फाइनल? नहीं यार, आई couldn't watch the match. डू यू नो व्हाट हैपेंड इन अ मैच और यू डोंट नो? I have read what happened in the match, मैंने highlights नहीं देखी हैं ओह अभी तक। माय गॉड, बिजार सीन्स, बिजार, मतलब लिटरली बिजार सीन्स, I मतलब। saw Diaz का बट पेनल्टी दो, वो क्लिप मैंने देखी है। भाई, मतलब honestly speaking, it was I cannot even explain what happened. Matlab, it's in that level.
तो ओ माय गॉड, मतलब ऐसा नहीं देखा है, और ऐसा फाइनल आई डोंट इवन नो नेक्स्ट कब होने वाला AFCON is always like this. कुछ है। ना कुछ हाँ, दैट इज कुछ ना आल्सो कुछ ट्रू। होता ही है. आई सॉ अ क्लिप, आई डोंट रिमेम्बर कौन से गेम्स का था, मे बी फाइनल का ही हो सकता है वो, जहाँ पे बॉल बॉयज एक टीम के सेकंड गोलकीपर से लड़ रहे हैं, लिटरली दे मैन हैंडलिंग हिम. क्यों? क्योंकि वो जो मेन गोलकीपर खेल रहा था उसका यही टावल मैच उठा था, रहे थे. यही ये मैच था, फाइनल था ना वो. यही मैच था। टावल उठा रहे हाँ, थे वो, फाइनल था वो, उसने टावल मेंडी। नहीं लिया. तो मेंडी का, हाँ, तो मेंडी वाज द गोलकीपर, हाँ, राइट? सो करेक्ट तो करेक्ट, सेकंड मेंडी. गोलकीपर था, उसका काम ये था कि एक टॉवेल पकड़ के रखो, बिकॉज आई थिंक वही है, इट वाज ओसाज, आई थिंक इट्स द ड्यू फैक्टर व्हिच वाज हम्म. प्लेइंग अ पार्ट। सो ड्यू आ जाता है, गोलकीपर को दिक्कत होती है, तो गोलकीपर ग्लव्स, अपना ग्लव्स पोंछ सके, वरना इट स्लिप्स, राइट? वगैरह वगैरह। तो द सेकंड गोलकीपर हु वाज नियर द नेट, एंड देन द अदर ओपोनेंट, मोरक्को के जो प्लेयर्स थे, वो लोग आपस में करेक्ट, लिटरली, मोरक्को के बॉल बच बॉयज, वो नॉट इवन प्लेयर्स, बॉल वो- बॉयज. नहीं, were they, They were I ball think they were boys. players है, They they were were ball ball boys। boys. They were ball Okay, they boys. were, That's the bizarre part. मतलब वो स्कूल में नहीं होता है क्या? तो मतलब लेकिन I think there's one rule which really needs to come in after all these things which have happened, is there needs to be this one rule which FIFA needs to implement, कि अगर if a team has moved out of the pitch, Hmm. for out of the pitch, there needs to be a timer कि इतना seconds के अंदर, या Otherwise, they have forfeited the game. करेक्ट, मतलब वो तो बिकॉज, मतलब आई डोंट थिंक, आई डोंट सी दैट मेकिंग, मतलब अभी अगर वो नहीं आया, वो 1 घंटे या 2 घंटे बाद अगर आएंगे, वापस बोलेंगे नहीं अभी हम खेलने के लिए तैयार है। ऐसा आई नहीं डोंट सी होता हाउ है. डस मेक सेंस। आई मीन दे विल, दिस मैच आल्सो दे विल गॉन फॉर व्हाट 15 odd minutes, आई थिंक मोर देन 15 minutes। More than 15. I I mean, honestly don't think they should have been allowed to continue the game for whatever reason they were allowed to continue the game, but there needs to, इसलिए मतलब, because there's no rule around it, but there needs to be a rule around this। But वो सोचना, एक रूल लेके Brahim आओ कि ऐसा Diaz, ऐसा है। when he thought of taking the penalty and when he actually took the penalty, there was a gap of 15 to 20 minutes. करेक्ट, भाई 15-20 मिनट करेक्ट। क्या से क्या नहीं हो जाता है. पेनल्टी में इतना टाइम है. नो वंडर ही मिस, मतलब उसका कोई कुछ बोल नहीं सकता है उसको. तो सर्कमस्टांसेस was ऐसा. और नहीं, और एक चीज मैंने देखा है, whenever ऐसा पॉज आता है ना पेनल्टी में, why do always players always try to hit to the center? I remember the another one, where Bernardo missed a penalty, uh, Champions League semi-final 3 years Against ago, I think, against Real. हाँ हाँ, I think it was Madrid, I think it was Madrid semi-final। तो वहां पे भी पॉज आया था, बॉल नहीं मिल रहा था, बॉल वापस नहीं किया था क्राउड ने बॉल, और वो जो क्राउड था ना, वो चूतिया सिटी का ही क्राउड था, वो बॉल पकड़ के बैठा हुआ था, वो बॉल वापस नहीं दे रहा था। ही ऑल्सो ट्राइड टू हिट इट थ्रू द सेंटर। चल, एक चीज तो तूने एक्नॉलेज करी, सिटी के क्राउड एंड फैंस आर चूतियास. तो आई डिड नॉट that's से my दैट, आई takeaway मीन from this whole conversation we have had. वही तो तुम यूनाइटेड फैंस की दिक्कत है ना, हाँ, हमारी दिक्कत है. तुम चेरी पिक करते हो चीजों को। हमारी दिक्कत, हाँ, why would we not? बट जो तू अभी पेनल्टी वाली बात कर रहा था ना, उस पे एक और चीज, आई डोंट रिमेम्बर मैं किसका पॉडकास्ट बोल रहा था. देयर वर सम यूनाइटेड एक्स प्लेयर्स ओनली. दे वर टॉकिंग अबाउट हु वाज द पेनल्टी टेकर और वो लोग क्यों नहीं लेते थे. आई थिंक इट वाज यही स्कोल्स का और निकी बट वाला जो अभी चल रहा है पॉडकास्ट. हाँ 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 ठीक है. हाँ हाँ। उसमें आई थिंक ड्वाइट यॉर्क आया था. आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर ड्वाइट यॉर्क. या नहीं, ड्वाइट, सॉरी, एंडी कोल आया था. आई ऑलवेज कंफ्यूज यॉर्क विद कोल. एंडी कोल आया था. एंडी कैरोल, कोल कोल, एंडी कोल. जो गोल का भाई, ए भाई, तुम. वाज एंडी कोल, आई फॉरगॉट। एंडी कोल, अच्छा, मिल गया। ही इज प्रोबेबली द हाँ हाँ हाँ। मोस्ट अंडररेटेड बार्कलेज के टाइम का स्ट्राइकर. ही हैज स्कोर्ड सो मेनी गोल्स एट बट सो मेनी एनीवे, क्लब्स. जो कोल हैड अ ब्रदर ना, हाँ, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम. जो कोल आल्सो हैड अ ब्रदर।
I forgot his name. Nah, he didn't. Um, he didn't. Okay. Anyway, sorry. Go on. So he was such a clinical finisher, okay, Hmm. but he never used to take penalties. Never. जो भी तेरे को उसको गोल्स दिखेंगे ऑलमोस्ट आई थिंक दो या तीन गोल्स छोड़ के ऑल आर नॉन पेनल्टी गोल्स. एंड उसने एक ही चीज बोली टू मी, जो भी मैं एक्शन करूंगा टू स्कोर द गोल दैट हैज टू कम इंस्टिंक्टिवली. मैं ट्रेन ही वैसे हुआ हूँ. एज अ स्ट्राइकर इफ आई एम अ पोचर, मेरे को अपने इंस्टिंक्ट्स पे ही काम करना है, राइट. मैं वो सोच के Hmm. काम नहीं कर सकता. मैं वो सोचूंगा तो आई एम गोइंग टू ओवरराइड. एंड पेनल्टीज, फ्री किक्स, कॉर्नर्स आर सच थिंग्स व्हेन यू हैव टाइम टू थिंक ऑन द पिच. Other than Hmm. that, if you're running or if you don't have the ball, if you're running behind the ball, if you're making the run, things happen instinctively. तुमने रन मारा, तुम्हारे दूसरे प्लेयर ने पास किया, उसके बाद तुम देखोगे क्या करना है, राइट. तो मे बी देर आर प्लेयर्स जो अपने इंस्टिंक्ट्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, बट बिकॉज आज के टाइम पे स्टैट्स का ज़माना है. इफ़ यू डोंट टेक कॉर्नर्स, if you don't get assists, if you don't score goals, you won't stay relevant. So they don't think about these True. things. I True. remember I've never seen Paul Scholes take a corner or take a free kick. He had a peach of a right foot. He could really strike the ball, but कभी नहीं किया उसने. There might be a reason, right? तो वो चीज़ है और वो एक्चुअल में दिखता है Agreed. प्लेयर्स का. When they come under pressure, when they've Hmm. had more than the time that they should have before a penalty or a free kick, Hmm. 9 out of 10 Hmm. times they fail. इसलिए तो वो वार वाला भी Hmm. जो आया Hmm. था तब यही तो प्रॉब्लम थी ना, कि जो पेनल्टी में टाइम लगता था एंड देन वो कीपर के फुट की वजह से रीटेक करते थे. टाइम नहीं देना है. Correct. इफ इट्स अ डिसीजन, लो पेनल्टी. Hmm. थिंग्स आर देयर, बट ऑफ कोर्स दैट्स. That's. Ah. Chalo, boss. I think we will end it then. एंड सिटी का मैच स्टार्ट हुआ. My start हो गया. I will turn on my VPN. दुबई शेनानिगन्स, मनी दो सेविंग पैसे शेनानिगन्स. नानी आई थिंक वी हैव लॉस्ट हिम. चलो, शबा खैर. We'll meet you guys soon next week, same time. Bye bye.